NIFTEM is a world-class institution and a center of excellence established by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India in 2012. It is a center which works on three basic tenets, that is knowledge, innovation and outreach. It has been running BTech, MTech, MBA and PhD courses, and so much so that in the only 4th years of its existence, in 2015-16, it earned 50th rank out of 700 universities of the country and 3,600 institutions of higher education of our country. The ranking was done by Ministry of Human Resource Development. When we started in 2012 and we admitted students in BTech and MTech course, we felt that since NIFTEM has been established for development of the food processing sector and food processing industry on the one hand, but at the same time it also has to look at the all-inclusive growth wherein the farmers grow and become prosperous, the villages grow and become prosperous. We thought we must devise some sort of a course which should take care of these two things. And that is why we devised this village adoption program as a compulsory part of the BTech MTech course at that time, which later on became a compulsory part of MBA and PhD courses also. When we started the course, we felt that students, when they study food processing, food technology, they must know how their raw material is produced. How does the farmer toil in the field? How hard does he work? How do the farmers grow these things in their fields? And then how does it travel from the farmer's field to the consumer's plate at one end? And at the same time, what does the farmer gain out of it? Unless the student knows these things very clearly, unless the student knows on this inefficiency of the supply chains at different points, and he tries to improve the supply chain inefficiencies, he will not be doing justice to his course and he will not be doing justice to the food processing sector. निफ्टेम के मोस्टली स्टूडेंट्स शहरों में से हैं जिन्हें गांव की लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब हम वैप में गांव में जाके रहते हैं तो हमें गांव वालों के पोटेंशियल और उनकी प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल से जानने का मौका मिलता है, जो हमें एक बेहतर फूड प्रोसेसिंग प्रोफेशनल बनने में बहुत हेल्प करता है। That is why we devised this course of village adoption program, under which when the students join, we divide them into groups of 10 to 15 each and put them under one faculty. Each group is then given the freedom to adopt one village anywhere in the country. Once the village is adopted by the group, then the group takes care or nurses the village for the all-round development of the village. For 4 years they are in BTech and 2 years they are in MTech or MBA or PhD. The idea is that the students must work at all the problems of that particular village, whether it is a social issue like Beti Bachao, Beti Padhao, whether it is a social issue like female feticide, whether it is a social issue of cleanliness and Swachh Bharat Abhiyan, whether it is an issue of popularizing renewable energy in the villages, or the main focus of the whole effort of the group should be that the farmers and youth of that village should be trained, should be made aware about value addition, food processing. How does it help them to reduce their wastages? How does it help them to keep their things for a longer time? How does the shelf life of their produce increase? And how does the farmer's income grow up by connecting to value addition and food processing industries? That is the main aim of the village adoption program. And once the group adopts the village, for doing all this, looking at the social issues and trying to tackle them, as well as focusing on value addition, food processing, training farmers and rural youth to become micro-entrepreneurs in the food processing sector, the group goes and stays in the village once every semester for 6 to 8 days. And when they go there, I must share with you that this is not very easy work to do. Village adoption program has many challenges too. Students have to stay with their mentor in village only. Though students are in a quite enjoying mood when the program commences, but as it progresses, students find it quite challenging to acclimatize themselves in rural ambience. Being a student of MBA, I was really keen about rural marketing, and it turned out to be a two-way learning for me. It was my real privilege to be a part of a program where knowledge, innovation and outreach was helping in transforming and upliftment of rural India. Though the challenges I mentioned are really small and can be easily neutralized with the passage of time, as they are really small in comparison to the challenges which rural India is facing.
when they go there, stay in difficult circumstances, but at the same time, the commitment level is so high of their students and the faculty that they work round the clock in the villages when they are there, train the farmers, train the rural youth. They make the general population of the village aware of new scientific concepts. They make the children aware of the new scientific concepts and technologies. They also guide the students to become career oriented and what careers they could choose in future. They establish libraries in the villages so that students and other people of the village get benefited to gain more and more knowledge. So in this way they try to cover all the issues and all the problems which the village has. Village adoption is not a mere routine course, not a mere exercise which the university in NIFTEM does. It is something which is done from the heart of the students and faculty. They feel for the farmers, rural youth, for their villages, and they want to improve them. The idea is to connect our students and the faculty to the grassroots of the country, to the villages of the country, because India doesn't actually reside in Mumbai or Chennai or Kolkata or Delhi alone. India actually resides in villages. And unless the villages of the country develop, India cannot develop. And we very firmly believe in NIFTEM that the villages cannot develop unless the farmers of the village prosper, unless the rural youth of the village prosper and become employed, or they become micro entrepreneurs and they have their own units in the village itself at their doorstep. The idea is that the farmers must be made to understand that they should not sell their produce raw, which they are doing it now, and which doesn't give them enough income at all. And that is why a lot of farmers' families, the younger generation of the farming families, are leaving agriculture. For example, a farmer which grows potato gets hardly 2 rupees per kg anywhere, let's say any village of Bihar or UP, while the same potato sells in Patna or Lucknow or Delhi for 16 or 18 rupees per kg. So where does this total money go? Why doesn't the farmer get enough money for his hard labor, for the way he toils in the field? This is needed to be understood by the students and faculty so that they can study the supply chain, find out wherever are the inefficiencies. Why does this distortion come up? And they need to find out solutions to plug these inefficiencies so that ultimately the farmer starts gaining, his income starts going up, and the farmers become richer and richer, more prosperous, and the villages become more and more prosperous and become center of excellence. The farmers need to also sort of be educated by the modern scientific ways of adding value to their produce. So the village adoption program ultimately is based on a two-way exchange of knowledge. One way is that the scientific knowledge which the students and the faculty of NIFTEM have, they transfer this knowledge to the farmers, how to add value to their produce, how to save it from wastages, how to store it scientifically so that their income goes up and there is no wastage. On the other hand, the students and the teachers, the faculty which goes into the villages, they gain a lot of knowledge, a traditional knowledge, the common sense on which the village or the villagers survive today in India. And that also is a very strong backbone of the country. This traditional knowledge needs to be now, scientific input needs to be given to it so that this knowledge can become better. So this two-way exchange of knowledge makes the students also very, confident, more robust, more strong, so that, they say that after undergoing this village adoption program, they become so confident that they can survive and make their own way and prosper in life any part of the world without any problem. विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम के दौरान हम ऐसे युवाओं की पहचान करते हैं जो उद्यमशील बनना चाहते हैं। इन युवाओं को हम लोग अलग अलग चरण में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। 1 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग और 4 हफ्ते का एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम निफ्टेम की ओर से ऐसे युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इन ट्रेनिंग्स के दौरान प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे बनाना है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की असेसमेंट कैसे करनी है, उसको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना है, मशीनरी कहाँ से लेनी है, किस तरह से कौन सी प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाना है, FSSAI का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, DIC में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक लोन्स के थ्रू कैसे ली जा सकती है, अपने प्रोग्राम को चालू करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से करना है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही कुछ उद्यमशील युवाओं से मिलाने के लिए जिन्होंने निफ्टेम के साथ जुड़कर खाद्य प्रसंस्करण में अपने नए व्यवसाय शुरू किए और कामयाबी की नई मिसालें हासिल की। मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं गांव ताजनगर गुरुग्राम का रहने वाला हूं। मैंने 2004 में अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़कर काम पर लग गया। मैंने अलग अलग क्षेत्र में 8 प्रकार के काम करे, पर किसी भी काम में मैं सफल नहीं हुआ और मैंने अपने सभी काम बंद करने पड़े। तकरीबन 5-6 महीने पहले मेरी मुलाकात निफ्टम वालों से हुई। निफ्टम वालों ने मेरा काम करने का तरीका देखा। उन्होंने अपने तरीके से बताया कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, कैसे लाइसेंस लेके और अच्छे से काम कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को FSSAI का लाइसेंस दिलवाया, बार कोड दिलवाया। 1 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने हमारे गांव में करवाई और 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए निफ्टम यूनिवर्सिटी बुलाया और वहां पे मेरी ट्रेनिंग करवाई। उनकी मार्केटिंग के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और साथ में जुड़कर जो बड़े मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश करी, जहां पर कि वो अपना ब्रांड बनाकर मार्केट में बेच सकें। अपने लेबलिंग के साथ काम करने के लिए अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाया, जो कि मैंने क्रीनी मसाले के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। जो मेरे क्रीनी मसाले हैं वो आज बड़े बड़े स्टोर में जा रहे हैं, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो गई है और अभी हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। मैं निफ्टम का, हमारे राष्ट्रपति जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस गांव को गोद लेकर यहाँ पर रहने वाले जो अपना काम कर सकते थे उनके लिए सहयोग किया, उन्हें सशक्त बनाया। मैं निफ्टम का, राष्ट्रपति भवन का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे और मुझ जैसे अन्य लाखों लोगों के बारे में सोचा और उन सबको इस काबिल बनाया कि वो अपना कुछ कर सके। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरचरण सिंह मान मक्खी फार्म तुंगली ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਫਟਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਫਟਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਿਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। मेरा नाम ज्योति बांदल है। मैं पिंपरी गवली की रहने वाली हूँ। हमारा गांव शहर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है।
हमारे गांव में 1 साल बारिश होती है और 2 साल बारिश नहीं होती। उसकी वजह से खेत में कुछ भी पैदावार नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारे घर में कभी अनाज रहता तो कभी नहीं रहता। इस कारण छोटे छोटे बच्चे और परिवार पर आर्थिक समस्या रहती। ऐसी आर्थिक समस्या का सामना करने के लिए मैंने खेती के साथ पापड़ बनाने का काम शुरू किया। जो पापड़ मैं गांव में बेचती थी उसका सही दाम मुझे नहीं मिलता था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर ही नहीं रही थी। उसके बाद एक दिन निफ्टेम की टीम गांव में आई। जब हमने पहली बार सर्वे किया तब हम बहुत सारी औरतों से मिले। उसमें से एक थी ज्योति बांदल। जब हम इनसे पहली बार मिले तब हमने देखा कि ये घर घर में पापड़, चकली, कुरडिया ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है आसपास के छोटे छोटे घरों में। तो हमें इनको देख के लगा कि इनमें बहुत पोटेंशियल है आगे अच्छा काम करने का और एक बहुत अच्छी विमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती है। हमने इनको निफ्टेम के हेल्प के थ्रू काफ़ी गाइड किया कि अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती है, हाइजीन लेवल कैसे बढ़ा सकती हैं। पहले जैसे ये चूल्हे पे बनाती थी तो हमने इनको बताया कि गैस पे अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो इससे आपकी हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट होगा और जो क्वालिटी मिलेगी हमें वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। पापड़ में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, पैकेजिंग कैसे अच्छी कर सकती हैं, तो हमने इनको इन सब चीज़ों में काफ़ी गाइड किया। जब इनका प्रोडक्ट बन गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि अब इस प्रोडक्ट को हम कहाँ बेच सकते हैं। तो हम छोटे छोटे मार्केट्स गए, पहले छोटे छोटे शॉप्स में गए, उसके बाद हम अहमदनगर गए और वहाँ पे भी हमने यही चीज़ बताई और फिर 2-3 विजिट्स के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है हमें एक परमानेंट लिंकेज मिला। अब मेरा पापड़ बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरे साथ गांव की कई महिलाएं भी इस काम में जुड़ी हैं। उन्हें भी रोजगार मिलता है और मुझे भी फायदा होता है। पापड़ बनाने के इस काम से गांव की सभी औरतों को रोजगार मिल गया और इस रोजगार से गांव की औरतों को काफी पैसा भी मिल गया। निफ्टेम टीम आई और उसने ज्योति को पापड़ बेचने का काम बड़े पैमाने पर शुरू करने में सहायता की। आज ज्योति घर में मर्दों के बराबर कंधा मिलाकर साथ देती है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुधरी है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अब वो होशियार भी बन गए हैं। मेरा सपना मेरे बच्चे ही हैं, इसलिए मैं खूब मन लगा के काम कर रही हूँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही हूँ। मैं निफ्टेम की पूरी टीम की और अपने परिवार की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस उद्यम को चलाने में मेरी इतनी सहायता की। I would like to share with you with a lot of satisfaction and little pride also, in my own humble way, that in the last 5 years journey of NIFTEM has been quite eventful, quite exciting and quite fulfilling also. You know, NIFTEM was expected to become one-stop solution provider for the food industry and the food sector, and it has been playing its role very effectively. NIFTEM was also expected to, reach out to the farmers and rural youth and make them entrepreneurs of tomorrow so that they add value to the produce and the wastage of food products of the farmers becomes lower and lower day by day. Their income goes up day by day. NIFTEM is also looking at a scenario where two things can be done. One, the traditional Indian food, which has a lot of value, which has a lot of nutrition and which somehow has got neglected, NIFTEM is trying to resurrect it, bring it back in a scientific manner, give input of science to the traditional food so that traditional food can be produced in a standardized way on a mass scale, and it can be packed nicely and hygienically and not only distributed all over the country but all over the world. NIFTEM is also trying to become a place where new products can be developed out of the produce which are grown in different parts of the country, so that more and more new products come up, more and more new efficient ways of producing new products come up, and ultimately whatever we produce in the country is processed, value added in such a way that the wastages become almost zero. And in this way, NIFTEM's dream is to make India the food factory of the world one day. निफ्टेम का ये विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम साल 2012 में शुरू हुआ था। अब तक हम लोगों ने पिछले 5 साल में 80 से ज़्यादा गाँवों में और लगभग भारत के 22 राज्यों में अपने इस निफ्टेम के विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम को पूर्ण रूप से सफलता के साथ पूरा किया है।
इस विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम में हमारे विद्यार्थी न सिर्फ गांव की असलियत से रूबरू होते हैं, बल्कि उनको ये भी पता लगता है कि खाद्य श्रृंखला में कहाँ कहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और नुकसानों को कैसे कम किया जाए। इन सब के साथ साथ उनको ये भी एक एहसास होता है कि जो गांव में मुश्किलें हैं जीवन यापन की, उनको कैसे कम किया जाए और उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। We feel lucky to be the part of this village adoption program. No doubt ये हमारे लिए एक lifetime experience है। इस प्रोग्राम की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमें ज़मीन से जोड़ता है और सहज बनाता है। I am happy to be associated with such a great, novel and noble program which is being implemented by NIFTEM to transform the rural areas of the country, to transform the farmers, make them prosperous and transform the rural youth into entrepreneurs of tomorrow. I only wish if this program is implemented in all the villages of the country, then millions of such micro-enterprise in food will be established all over the country and India would become the food factory of the world. I am really thankful to my students and faculty who have been putting their heart and soul into it and working very hard to make this a success.